So, today I'm going to tell you what kind of derivation you need for electronics. If is the first module, that is one diode derivation plus theory. Okay, is it fine? Derivation or theory. In the diode part, they can ask you the VI characteristic of diode. Okay, or they can ask you, the construction and working principle of diode. Okay, VI करेक्टरिस्टिक पूछते हैं, कंस्ट्रक्शन पूछ, लाइक द बेसिक थ्योरी ऑफ डायोड, थोड़ी सी of diode they can ask from you. Next, this is from module 1. Zener diode में, Zener diode they'll ask you numerical only, mainly न्यूमेरिकल, एंड उसमें वो बोल देते हैं कि ड्रॉ सर्किट, सर्किट बनाओ। तो सर्किट तो तुम्हें वैसे भी याद करना पड़ेगा, राइट? Third topic is rectifier. Rectifier they can ask you derivation. Okay, like I yesterday I show you some papers also in ask you derivation करनी है. Like they can ask you IDC derivation, IRMS derivation, maybe half wave rectifier, maybe full wave rectifier, right? That I'll tell you by sync by क्यूज particular कौन सी derivation पूछ, एक rectification efficiency है की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी की, ट्रिपल फैक्टर की भी डेरिवेशन दे आस्क यू सम टाइम। ओके, एंड आई टोल्ड यू कि बी डिस्क्रिप्टिव नोट्स में सबकी डेरिवेशन दी हुई है, बट स्टिल रिमाइंड में कि डेरिवेशन कौन सी स्टार्टिंग है। तो डेरिवेशन ऑफ रेक्टिफायर व्हिच इज फ्रीक्वेंटली आस्क। एक बार क्वेश्चन जब विल डू रिवीजन ना, देन विल फाइन आईडीसी आईआरएमएस एफिशिएंसी। नाउ कि डायोड में से थ्योरी का क्वेश्चन आता है और रेक्टिफायर पे डेरिवेशन आती है, करेक्ट? नाउ फोर्थ क्वेश्चन यू विल गेट इट फ्रॉम द ओपैम्प। तो ओपैम्प की भी आई टोल्ड डेरिवेशन मे बी इन्वर्ट की, नॉन इन्वर्टिंग की, तो एक डेरिवेशन पूछते हैं। सीएमआरआर की डिफाइन पूछते हैं, डिफाइन सीएमआरआर, एंड after that fifth topic is MOSFET. So MOSFET is point, okay? And every time they'll ask you drain current की derivation. ठीक है, अभी पढ़ोगे तो what is drain current. There are maximum chances that you will get the derivation, and every time if they'll ask, then they'll ask you the drain की derivation. Yeah, or they can ask you the construction and working principle of MOSFET. तो ये एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। After that, sixth topic is amplifier done. Then sixth topic is K-map. K-map के कुछ हैं, काउंटर, रजिस्टर, कन्वर्जन, डिजिटल में कोई भी डेरिवेशन नहीं आती। एंड कम्युनिकेशन आई स्टार्ट, तो उसमें मैं बता दूंगी कि क्या डेरिवेशन आती है, क्या नहीं आती। So we are starting with the communication module, that is chapter 7, fundamentals of analog communication. In this we'll have the amplitude modulation, frequency modulation, and phase modulation. So basically we'll get question from amplitude or frequency modulation. एक क्वेश्चन 100% या तो पे आएगा या फिर FM पे आएगा, and that you will get numerical. Okay, I'll tell you what kind of it. If you have, सबसे पहले suppose this is the message signal. Message signal means, like suppose I am speaking, my voice is a signal, correct? And I am speaking, I am giving some message to you, correct? Hmm? So this is message signal, or like I am speaking a kind of signal only, correct? So after that what we need, we can change the signal modification, modify the signal.
and the signal which we need to modify that signal as pink signal. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि मैं बोल रही हूँ माई वॉइस इज एंड वो इस फॉर्म में सिग्नल की फॉर्म में जा रही है, बट सम स्टूडेंट्स आर सेइंग मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है या आपकी वॉइस कम आ रही है या आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन आई नीड टू मॉडिफाई माई सिग्नल, राइट। तो मुझे अपनी वॉइस को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई। तो जैसे कई बार तुम लोग कहते हो कि मैम आवाज़ ब्रेक हो, तो मेरी तरफ से तो आवाज़ ठीक जा रही है, बट कहाँ प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, सिग्नल में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो वही चीज़ को ये लोग करेक्ट करते हैं। तो दैट इज टेक्निकली नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। क्यों, तो ये मेरी वॉइस है और ये वॉइस क्या है, दैट सिग्नल्स नीड बी मॉडिफाइड, क्योंकि तुम्हें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो उसे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक है, समझ गए ये चीज़ की क्या है। देन विल हैव कैरियर वेव, कैरियर सिग्नल, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड। ठीक है, प्रॉपर इतना बन नहीं रहा, बट जो ये मैं सिग्नल आ रही हूँ इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। दिस नोन एज कैरियर, and on the axis will take time, and on take ampli, क्या लिखना है, एम्पली। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। अब जैसे मैं बोल रही हूँ ये मेरी वॉइस है, वॉइस तो मेरी ऊपर नीचे हो रही है, वॉइस एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो रहा है, तो इस चेंज कर, कहीं एम्पलीट्यूड कम है कहीं ज़्यादा है, राइट। अब ये कैरियर सिग्नल है जिस पे तुम सुपर इम्पोज करते हो, मतलब क्या करते हैं, वॉइस वाला सिग्नल और ये कैरियर सिग्नल दोनों को एक साथ कंबाइन कर, एक साथ कंबाइन करने से क्या होगा, जो मेरी वॉइस ब्रेक होके जा रही थी, वॉइस कम जा रही थी, वो तुम्हारे तक प्रॉपर पहुंचेगी। क्यों, क्योंकि कैरियर सिग्नल में विल हैव पर्टिकुलर जो है, विल हैव पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको मिस एंड मैच, मतलब ये खराब सिग्नल है और ये ठीक है, तो दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो जो आउटपुट सिग्नल मिलता है वो बिल्कुल करेक्ट सिग्नल मिलता है जो कि रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं, बताओ मुझे। हम्म, Yes, ma'am. ओके, नाउ सी, दिस इज अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, एज आई टोल्ड कैरियर सिग्नल, सा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को चेंज है। अब नाउ व्हाट वुड बी द आउटपुट, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जो, ये ठीक हो गया है सिग्नल, दैट इज लाइक, देखो कि जो इसकी शेप है, शेप विल लाइक दिस, एक्चुअली इस फ्रीक्वेंसी ट्राई करना सेम, बट एम्पलीट्यूड इज, so this is the it, this is the, got it, basically amplitude by am, and am is defined as this of varying the amplitude of the carrier wave proportional the amplitude modulating, थ्योरी नहीं पूछते, न्यूमेरिकल है, बट तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सिग्नल भेजा तुमने दिल्ली से मणिपाल भेजा, ठीक है, तो वो सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही, वो सॉर्टेड हो, वॉइस आ रहा है, ठीक
है। तो तुम्हें अब करेक्ट सिग्नल भेज जैसे फोन पे बात करो, फोन पे कई बार नेटवर्क नहीं आते, तो फोन वाले क्या करते हैं, करियर बात उस और सुपर इम्पोज बाद विल गेट मॉड्यूलेटेड सिग्नल और इस एज यू कैन एम्पलीट्यूड। तो जहाँ पे तुम धीरे बोल रहे हो, सपोज तुम अपने फ्रेंड से बात करो, वहाँ पे तुम धीरे, नेटवर्क कंपनी वालों ने क्या कर दिया, वहाँ पे आवाज तेज कर दी। और जहाँ पे तुम बहुत ज्यादा चीख के बोल रहे थे, जो कि नहीं जाना चाहिए था एग्जैक्टली ज्यादा लाउड वाली नॉइस, तो वहाँ पे कंपनी वालों ने क्या कर दिया, तुम्हारे वॉइस को, सिग्नल को का एम्पलीट्यूड कम कर दिया। जहाँ कम था वहाँ ज्यादा कर दिया, जहाँ ज्यादा था वहाँ कम कर दिया। बेसिकली दे हैव डन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ताकि आउटपुट में करेक्ट सिग्नल जाए। दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नाउ अंडरस्टूड? हम्म। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Once could you show the definition? Yeah. Now next is the spectrum. Spectrum of signal. Okay? Spectrum क्या होता है? I'll show. Like there is a change in FC have C plus FM, then we'll have FC minus FM and amplitude XX. Amplitude is MAC by 2. इन सब का मतलब बताऊंगी कि क्या है. Then have MAC by 2 have AC. Yeah. And on the x-axis have frequency. So what is FC? What is FM? As I told, क्या होता है, carrier signal. Carrier signal की frequency is known as FC. Okay. Another one is carrier signal का amplitude. So carrier signal amplitude by AC. Similarly, we'll have क्या है, AC हो गया, FM. M. M means the modulating signal. I told you. So modulating signal की frequency is divided by FM and modulating signal का amplitude by modulating signal की frequency is FM. हाँ, modulating signal का amplitude is AM. Okay, got it? तो अब ये And पता could you लग repeat the जाएगा, definition of modulating signal? modulating signal which is the signal which needs to be modified. Like if there is an error, there is a noise, there is some distortion in that signal, the signal which needs to be modified, that needs to be corrected. Okay, Okay, ma'am. suppose you are speaking on phone with your friend, you are in India and he is outside, so तुम्हारे से आवाज ठीक नहीं आ रही, so that signal is the modulating signal. Understood. So AC is the amplitude of the carrier signal, AC is the amplitude of the carrier signal, FC is the frequency of the carrier signal, FM is the frequency of the modulated signal. ये बस तुम्हें थोड़ा सा याद करना है. FC plus FM is known as B. USB stands for upper side band and FC minus FM is B. LSB stands for lower side band. Yeah. नेक्स्ट डायरेक्ट मैं फॉर्मूले लिखवा रही हूँ, जस्ट नीड टू PT is equal to C plus US फॉर्मूले से, एंड अगेन guys mention handbook exam this for numeric Ma'am, once could you show the previous slide? formula. PT I is mean, equal, MAC by 2, what is M? M is the modulation. I'll tell modulation. Here M is the modulation. Okay. Now next is PT is equal to P plus P plus P plus PLS.
where P power. Once you will do numerical ना थोड़ा सा where PC is the carrier power. Carrier power means carrier signal की power. Okay, modulating carrier signal power. PSP as I told you are the sideband signal power. So PSP is upper side signal power. One is upper power. Okay, and now we'll have formula for PC, that is square by 2R, where R is the resistance. Similarly, we'll have USB formula, that is M square by 8R. M is the modulation index. AC I told you amplitude of carrier signal. Similarly, PLSP is also same, M square A square by 8R. Okay, if you solve it and substitute the value, then AC and R will be common, right? AC and 2R will be common, so we can get the formula P equal to A square by 2R 1 plus M square by, write down this all these formulas, but this PT formula in the numeric. So this for 100% modulation, that case equal to 1. Now modulation index or total modulation like M plus square plus M plus, and will have basically modulation form of M1 cos of pi Fm1 plus M2 cos of 2 pi Fm and so on. Like अगर दो मॉड्यूलेशन दिया सिंगल मॉड्यूलेशन दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग. It's too numerical. Ma'am. Here Ma'am, now see numerical can you show the previous slide? हाँ एक सेकंड पीछे वाला आपने क्या बताया and audio signal line 40 pi. Find first modulation. हाँ M का M amplitude modulating the carriers. Second, you calculate sideband frequency. Sideband frequencies mean you, and third, calculate width, bandwidth, write it down. Bandwidth M is A by AC. USB is how much? FC plus FM, and LSP is how much? FC minus. Next one, fourth one is calculate total power. Okay, power delivery equal to by 2R 1 plus by, okay, writing. Next is of sideband.
and formula for this one is m into I. Got it? दोनों क्या आवाज चली गई थी Yeah. Today we'll the frequency function, that is FM. Last lecture we have discussed the amplitude, right? So you have studied that in modulation the very amplitude, but in frequency the very frequency, right? And as you already know, proportion time about it, right? So frequency is inversely proportional to time, means if time in the wave, like suppose it complete its cycle up to t, like suppose completes that cycle up, and there is one another waveform complete cycle up to t by 2. So now tell me, in which case the first case or the second case, which cycle consumes more time, first cycle or First, second cycle? First cycle. If time consumes, then frequency will be less, right? less. And in the second case, the time consumes less, then frequency will be correct. Hmm? So similar here also. First we'll have randomly, I have taken modulating that signal that needs to be modified, right? Then we'll have the carrier signal. Carrier signal will have same amplitude frequency. Then we draw the frequency modulated signal. How will we draw? If there is on the negative side, then in that case time consumed by the cycle. Now see, up to here the cycle is positive. Here the modulating positive. So particularly for this case, the time consumed cycle is less. Okay. Again, it comes across negative side. So again, time is frequency is less. एम्पलीट्यूड इज सेम, फिर से नहीं बन रहा ये, बट सबका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है. अगेन इट गोज टू पॉजिटिव साइकिल, देन इन दैट केस अंडरस्टूड. सो व्हाट वी कंक्लूड, देयर इज अ पॉजिटिव साइकिल तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है. इफ देयर इज अ नेगेटिव साइकिल फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स डिक्रीज. गॉट इट? ज़्यादा पीक पे होगा नेगेटिव, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. ज़्यादा पॉजिटिव, सॉरी उल्टा बोल गई, जितना ज़्यादा नेगेटिव पीक पे होगा उतना कम फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग? ड्रॉ दिस वेवफॉर्म. Okay. So this one, these are the formulas for the case of FM. One of the standard equation for FM is one. Another modulation index formula is this one, and bandwidth formula is this. So write it down, then we'll do numericals. So now the numerical based on this, they have given FM equation 10 cos of phi 10 per 8 t plus 5 sin pi 1000. Yeah. Now they said calculate carrier frequency. Carrier frequency by f. Okay. Next they said calculate modulating frequency. Modulating frequency is divided by fm. Correct. Then they said frequency deviation. Frequency deviation is denoted by delta f. Then they ask you to calculate, right? Bandwidth is by noted by BW. Calculate all the values. Is this an easy question, right? All the values are given. See how this, and W in an FM
then audio 500 है ऑडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग या फिर करियर according to you. Tell me audio, like I said first, that is modulate or the carrier signal. Hmm? Modulating. Huh? I told my voice need that is mod and modulating basic 500 hertz. Correct? Yeah. Now they said modulating zero point 0.5 amplitude, like modulating m amplitude होगा ना जैसे 5 वोल्ट amplitude 5 volt and the deviation 5 kilohertz, that is the f, that 5. These things now they change the condition. The modulating volt 5 volt. Earlier it was zero point 0.5. Now it increases and in the voltage is in 0.5 volt. After AM1 and AM, right? Calculate the new frequency. Calculate the F2 accord. Now tell me up to here. You understood what they have given and what they want to ask? Hmm? Understood now? Yes, ma'am. Case beta is equal to delta F by Fm. Yeah? Fm is delta F. Okay. For the first case and the modulation same. Okay. So again, you can calculate beta is delta F by Fm. पहले एक बार पहले calculate. Tell me the value for beta. Calculate it. So right now the next case, if AM is 7.5, we need to calculate beta F. Now after that, that if AF voltage is raised to 10 volt while the modulating top to, चलो पहले यहाँ पे देखते हैं. So as you know the formula, इस केस में the AF voltage is raised to 10 volt modulating frequency hertz, what would be the frequency deviation produced? तो इस केस में बताओ frequency deviation का formula delta F, right? Tell me, KF is the frequency sensitivity and generally it is hertz per, and what is the formula for KF? That is delta F by AM. Delta F की frequency deviation, that is hertz, and amplitude of the modulating signal is, अगर voltage है तो volt हो जाएगा, current दिया होता तो ampere होता, but generally voltage. So इस केस में can you get KF? How much you got? Kilohertz per volt. Correct? ठीक है? Now you know the formula delta F is equal to KF AM. So delta F पता हमें इस केस में निकालना है. मैंने बोला कि KF दोनों के केस में से मिलेगा. फर्स्ट केस के KF निकाल लिया हमने, नया 2 किलोहर्ट्ज. That will use in second case, that 2 kilohertz per volt multiplied by second वाले केस में एम्पलीट्यूड कितना है 0.5. So from here you can get delta F. That would be much 50. तो पर देखो समझो. Now they said कि calculate modulation index. दो केसेस हैं. फर्स्ट वाले का तो निकाल दिया. सेकंड वाले का modulation index you can calculate again. Beta is equal to delta F
by Fm, right? Delta F we get it for hertz, 10 raised to power 3, and Fm 500. That would be 500. Okay, so you can get beta is 20. 80. No, sorry, 30. Yes, ma'am. Okay, so you calculated beta for both the cases. Clear? Now they said if the AF frequency amplitude of the carrier signal, amplitude of the modulating signal voltage raised to 10 volt. Okay, now the amplitude पहले कितना था 2.5, फिर कितना था 7.5, and after that the third case, दो cases हो गए, third case में they have said कि AM3 is how much now, AM3 that is they have given 10 volt, right? तो तीनों ही cases में KF क्या रहेगा, same रहेगा, first case, second case, third case. Now they are asking for this third case, you need to calculate frequency. Again the same formula, delta F is equal to KF into AM. KF is same, that is 2 kilohertz into AM much 10. Okay,